Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And I'm Shafiq Ahmed Channa. कल असां पढ़ियासीं sentences, type of sentences ऐं डिटेल में असां डिस्कस कया कि फंक्शन जे हिसाब सां स्ट्रक्चर जे हिसाब सां कहिड़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन आहिनि। सभ खां पहिरियों त स्टूडेंट्स जी जेकी फीडबैक आहे तमामु सुठो आहे ऐं तमामु सुठो लॻे थो त तव्हां पार्टिसिपेट कयो था, क्वेरीज़ क्वेश्चन्स बि कयो था ऐं ॿियो इहो त जेको तव्हांजा हीअं असां टेस्ट थी रहिया आहिनि तव्हांजो भरपूर तव्हां में पार्टिसिपेशन इट्स वेरी गुड। अच्छा, स्टूडेंट जेको क्वेरी अचे थी त सर कॉम्प्रिहेंशन करे स्टार्ट करो, बुक करे स्टार्ट कंदासीं। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट टेक्स्ट बुक। असां टेक्स्ट बुक में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस वगैरह एक्सरसाइज स्टार्ट कंदासीं। अॼु जो असां टॉपिक आहे मॉडल वर्ब्स ऐं पंक्चुएशन। So we are going to start with modal verbs and punctuation, but before we start, मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदुमि त अगरि तव्हांखे अञा बि को टॉपिक रहिजी वियो आहे ग्रामर में या कंहिंमें डिफिकल्टी आहे या तव्हां चाहियो था त को अहिड़ो टॉपिक जेको इंक्लूड कयो वञे त तव्हां कमेंट में लिखी सघो था। Assalamu alaikum. And I'm Shafiq Ahmed Channa. Our today's topic is modal verbs and punctuation. So कल असां डिस्कस कयो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऐं फंक्शन जे हिसाब सां स्ट्रक्चर जे हिसाब सां त दिस वाज द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अॼु असांजो लास्ट टॉपिक आहे मॉडल वर्ब्स एंड पंक्चुएशन। त अगरि तव्हांखे अञा बि को टॉपिक सिखणो आहे, को तव्हां सम्झो त तव्हांखे डिफिकल्टी आहे या को टॉपिक तव्हां रिपीट करणु चाहियो या जंहिंमें तव्हांखे प्रैक्टिस जी ज़रूरत आहे, तव्हांखे डिफिकल्टी आहे त तव्हां असांखे कमेंट में लिखो, असां उहो तव्हांखे ग्रामर टॉपिक कराईंदासीं। एंड इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेक्स्ट बुक कॉम्प्रिहेंशन। असां बुक्स मां स्टार्ट कंदासीं कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस ऐं एक्सरसाइज़िस जेके तव्हांजे टेस्ट में ईंदियूं। So let's start with modal verbs and punctuation. हाणे सभ खां पहिरियों त punctuation ऐं modal verbs आहिनि छा? What are modal verbs? Okay. And modal verbs are basically the verbs that act very differently to the ones you might be thinking of, such as work, play, eat. This is because modal verbs don't actually describe actions. Instead, they provide information about the function of the verb that is to follow. हाणे modal verbs ऐं auxiliary verb में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? Modal verb उहे verb आहिनि जेके action verb खां different आहिनि। हाणे action verb तव्हां पढ़िया आहिनि write, go, play, eat, त इन खां तमामु different आहिनि। They are modal verbs। ऐं जेके तव्हांजा verb play आहिनि उहे action verb आहिनि। This is because modal verb जेके तव्हांजा actions describe न कंदा आहिनि और जेके action verb हूंदा आहिनि जीअं go, come, play, work, ई action verb हूंदा आहिनि। ई जुमिले में को कमु थियणु शो कंदा आहिनि त ई action verb हूंदा आहिनि। पर modal verb action verb न आहिनि। They are a part of auxiliary verb, helping verb। माना जुमिले में उन में का meaning add कनि, का necessity शो कनि, का obligation शो कनि, permission शो कनि, advice शो कनि, त उनखे चइबो आहे modal verbs। Modal verbs always come before a traditional verb, but they explain the modality of the verb. ये उहे verbs हैं जेके जुमले में modality show करना, permission, या तांजी request, या तांजी जेके etc. show करना. That sounds pretty confusing, so let's just break down what exactly modality is. and असां discuss कंदासीं the modal verbs, also called modal verbs, modal auxiliary verbs or modal auxiliaries. Modal verb के modal verb चयो वेंदो आहे, modal auxiliary verb चयो वेंदो आहे, modal auxiliaries बि चयो वेंदो आहे, are special verbs which behave irregularly in English. They are different from normal verb like play, जीत माना ॿुधायो त action verb खां different हूंदा आहिनि। They give additional information about the function of the main verb. They have a great variety of communicative functions. इन्हनि जा जुमलनि में हिकिड़ो communicative हिसाब सां different functions आहिनि। Here are some characteristics of modal verb. Modal verb जा कुछ characteristics हैं जेके माना असां discuss करे रहे हैं। They never change their form. You cannot add s, ed or ing.
इन्हनि वर्ब में एस न लॻंदो आहे। जीअं मां चवां कैन त कैन्स न थींदो, कैंड कोन थींदो, कैनिंग कोन थींदो। त इन्हनि जूं ईडी इंग फॉर्म वग़ैरह फॉर्म्स ऑफ जीअं हूंदियूं आहिनि मेन वर्ब जूं, राइट, रोट, रिटन, ईअं इन्हनि जी वर्ब्स फॉर्म्स न हूंदियूं। They are always followed by an infinitive without to. ये infinitive बगैर use थींदा आहिनि। They are used to indicate modality, allow speakers to express, ऐं ये जुमिले में certainty show कंदा आहिनि, possibility, willingness, obligation, necessity, and ability. The modal verb उहे verb आहिनि जेके जुमिले में certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, and ability show कंदा आहिनि। Now let's see तव्हां हिन slide में ॾिसी रहिया आहियो त that what are the modal verbs. And modal verbs, if you see that will, shall, must, should, will, should, ought to, need to, dare, may, shall, will, can, will, would, cannot, could not, can, could, may, might, will, must. हाँ ये जेके वर्ड्स आहिनि ये मॉडल वर्ड्स आहिनि, को डिजायर शो करे थो, को प्रिडिक्शन, को अदरवाइज, को ड्यूटी, को ऑब्लिगेशन, को नो ऑब्लिगेशन, या करेज, परमिशन, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी टू एक्सेप्ट समथिंग, कंडीशनल फ्यूचर, इम्पॉसिबिलिटी, डाउट, पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी। त ये आहिनि मॉडल वर्ब जेके जुमिले में डिफरेंट फंक्शंस शो कंदा आहिनि। अक्सर हिकिड़ो सवाल ईंदो आहे त सर मॉडल वर्ब ऐं ऑक्सिलरी वर्ब में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली तव्हांजा उहे वर्ब आहिनि या नॉन एक्शन वर्ब आहिनि या हेल्पिंग वर्ब आहिनि जेके जुमिले खे कंप्लीट करण में कमु ईंदा आहिनि। ऐं मॉडल वर्ब उहे आहिनि जेके पंहिंजी मॉडलिटी माना परमिशन, एडवाइस या डिटर्मिनेशन शो कंदा आहिनि। Modal verbs are also sometimes called modals. In English, modal verbs are a small clause of auxiliary verb. असां ईअं चई सघूं था त जेके मॉडल वर्ब आहिनि उहो पार्ट आहिनि हिकिड़ो auxiliary verb जा। They used to express ability, permission, obligation, prohibition, probability, possibility, and otherwise. They are used before ordinary verbs and are often used to express meaning. त इहे जेको हिन फंक्शन असां हींअर डिस्कस कया आहिनि। हाँ त ॾिसी सघो था लिस्ट ऑफ मॉडल वर्ब, मां कुझु मॉडल वर्ब्स तव्हां सां डिस्कस कयां थो त कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शल, शुड, will, would, will, shall, should, ought to and should is same thing. Must, mustn't, may, might, can, could, have to, has to, don't, doesn't, have to. त इहे तव्हांजा आहिनि मॉडल वर्ब्स। Now let's start the modal verb जा कहिड़ी मीनिंग आहे ऐं उनजो कहिड़ो फंक्शन आहे। हाणे पहिरियों असां डिस्कस कंदासीं मस्ट। मस्ट शो थो करे हिकिड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, जीअं असां चवंदा आहियूं तव्हांखे ही लिखणु घुरिजे, पढ़णु घुरिजे, त हिकिड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ऐं an example, so you must stop when the traffic lights turn red. हाणे असां कंहिंखे चऊं था हिकिड़ो माना ऑब्लिगेशन था कयूं त तव्हां ज़रूरु लाइट तव्हांखे ज़रूरु बीहणु घुरिजे जे लाइट रेड थिए, टर्न थिए, ठीकु आहे, थींदो आहे न ट्रैफिक रूल्स जेको हुन लाइट्स हूंदियूं आहिनि। हाणे मस्ट छो थो करे सर्टेनिटी बि ऐं लॉजिकल कंक्लूजन। ही मस्ट बी टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। हाणे सर्टेनिटी छो थो करे त थी सघे थो उहो थकिजी पियो हुजे, त इन करे हुनखे आराम, छो त सॼो ॾींहुं हुन कमकार कयो। मस्ट नॉट छो थो करे प्रोहिबिशन, कंहिं शइ खां मना करणु। You must not smoke in the hospital. तव्हांखे हॉस्पिटल में स्मोक करणु न घुरिजे। हाणे असां मना था कयूं, प्रोहिबिशन। कैन, हाणे कैन जा इलाही डिफरेंट फंक्शंस आहिनि। कैन शोज़ एबिलिटी, कैन शोज़ परमिशन, कैन शोज़ पॉसिबिलिटी। हाणे एबिलिटी कीअं शो करे, आई कैन स्विम, मां स्विम करे सघां थो, या मां चवां आई कैन स्पीक चाइनीज़ लैंग्वेज, मां चाइनीज़ ॿोली ॻाल्हाए सघां थो, त इहो एबिलिटी शो कंदा। कैन ऑल्सो शोज़ परमिशन, कैन आई यूज़ योर फोन प्लीज़, इते असां छो था कयूं परमिशन। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, हाणे असां पॉसिबिलिटी छो था कयूं त स्मोकिंग जेको आहे न कैंसर जो सबबु थी सघे थो। So these were the uses of can. Now come to the could. Could जा भी कुछ functions हैं, there are different functions. Ability in the past. When I was younger, I could run fast. जॾहिं मां नंढो हुयुमि न त मां तेज़ भॼी सघंदो हुयुमि।
हाणे एबिलिटी शो तो करे पास्ट जी polite permission excuse me could I just say something हाणे परमिशन लाइ असां यूज़ कंदा आहियूं त उते could यूज़ करे सघे थो possibility it could rain tomorrow त हाणे could जेको आहे सो उहो possibility लाइ शो थी सघे थो may हाणे may is used for permission and possibility हाणे permission लाइ कीअं may I use your phone please छा मां तव्हांजो फोन यूज़ करे सघां थो now it shows that permission next may shows probability possibility it may rain tomorrow थी सघे सुभाणे बरसात थिए थी सघे तो सुभाणे बरसात थी वञे that shows probability त ये कुछ functions हुया must not can could ऐं may जा now let's start with other might show कंदो आहे polite permission लाइ example might I suggest an idea छा मां तव्हां सां को आइडिया शेयर कयां might shows possibility I might go on holiday to Australia next year Australia means थी सघे तो next year need not show lack of necessity या absence of obligation माना कंहिं शइ जी कमी या चई सघिजे तो obligation ज़रूरत न हुजणु I need not buy mangoes मूंखे ज़रूरत कोन्हे tomatoes वठण जी there are plenty of tomatoes in the fridge या घट obligation okay now come to should or ought to should and ought to same word used in for example I should speak truth I ought to speak truth त तव्हां should चओ या ought to it's the same thing हाणे should and ought to use in advice लाइ कंहिंखे advice करणु you should speak or you should ought to you should or ought to revise your lesson you should revise your lessons you ought to revise your lesson हाणे असां कंहिंखे advice था कयूं त तव्हांखे माना lesson माना revise करणु घुर्जनि logical conclusion he should be very tired he has been working all day long and conclusion भी show करना है असां उते भी यूज़ had better advice लाइ you had better revise your lesson त इहे तव्हांजा हुया मॉडल वर्ब उन जी मीनिंग ऐं उन जा यूज़ेस त हिकिड़े मॉडल वर्ब जी ॿ टे मीनिंग्स थी सघनि थियूं now let's start with the other one can ability permission offer भी शो करे थो Julie can swim हाणे हिते ability शो थो करे permission can I come with you हाणे हिते शो थो करे permission offer can I help you हाणे ये ॿई क्वेश्चन मार्क ते ख़तम आहिनि but one shows permission other shows offer हाणे could जा तमामु घणा concepts and uses in possibility that story could be true who knows हाणे past ability John could swim when she was 4 years old permission could I use your phone please request could you tell me the way to the station please may possibility in permission the president may come to visit our offices tomorrow if the meeting finishes before 5 p.m. permission may I borrow your dictionary might shows possibility we might win a prize but I doubt it yeah you may from reported speech में the president said he might come should advise like using a logical deduction maybe you should take an umbrella it is starting to rain John has revised all day he should be ready for exams and some deduction connect to deduce something or to advice line use the second you ought to write to your grandmother and shall offers lie suggestion lie shall I offer a taxi shall we begin the meeting now and will you use future tense auxiliary tomorrow I will be in New York yeah invitation will you join us for coffee won't you come in हाँ ये कुछ uses होया one modal verb can have different uses different meanings so now let's start discussing some rules there are certain rules which surround the use of modal verbs for example the word to must never be used after a modal verb हम पहले डिस्कस कयो तो to
modal verb का कोई use कौन हिंदू. Learning these rules and how a modal verb can function with a sentence can greatly help you in forming grammatical correct sentence. अगर ता के uses खबर and modal verb जा ता sentence grammatically correct लिखी सको था. Now let's have a look on the use of will. Will जा इलाहा uses and माना कुछ sentence पढ़ी बुझाएं तो a promise ला use करना है. Don't worry, I will be there. Now here it shows a promise. असा अक्सर promise करना है पर उनके पूरा फुलफिल न करना है ना. डोंट वरी आई विल बी देयर. हाणे विल ते शो तो करे प्रॉमिस. इंस्टेंट डिसीजन, आई विल टेक दीज बुक्स विथ मी. डिसीजन ला भी इनविटेशन या ऑफर. विल यू गिव मी अ चांस. प्रेडिक्शन ला भी जॉन स्मिथ विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट. और फ्यूचर टेंस जो थी टुमारो आई विल बी इन न्यूयॉर्क. हाणे ते विल जा ॾिसो केतिरा यूजेस आहिनि. सो वन मॉडल वर्ब or model auxiliary verb could have different uses. Will का कोई shall. The verb shall is used to express asking what to do. Shall I get the phone or will you? Offer ला use थींदा. Shall I call a cab? Suggestion ला भी shall I call again on Thursday? Would. The verb would is used to express. हाणे would जा uses in it are not be करना वञो because after these modal verb we will have a short exercise of modal verb. For permission, would you mind if I open the window? I have permission दा वठूं त अगर ता mind तो कोन कंदो जेकॾहिं अगर मां window open करी छॾी. For request, would you make dinner? सुठी request आहे न कंहिंखे तव्हां dinner ठाहींदा. Making arrangements, would you be available at 6 p.m. tonight? Arrangement like invitation, would you like to go out sometimes? Preference like can you prefer, would you prefer the window seat or the aisle? Such na the window side window tama can traveling the we always say the other side venda ya window side venda, so you can explore the things, explore the world. So these are the uses of would. The next we have should. Should या ought to is the same thing. The verb should is used to express advice. An example sentence में you should visit your dentist at least twice a year. Recommending action, you really should go to the new museum on Main Street. Prediction ला भी जगह uncertain. I posted the check yesterday, so it should arrive this week. Logical deduction, I have revised, so I should be ready for the test. Now let's start ought to. Ought to, I should sorry, meaning same. The verb ought to is used to express otherwise. You ought to have come to the meeting. It was interesting. Ought to जगह should we use कर सकते हैं that you should come, you should have come to the meeting. It was interesting. Or you should come to the meeting. It was interesting. Logical deduction in the $30 ought to be enough for the taxi. Now must. The must is used to express obligation, necessity. And should I must फर्क यू that it looks similar. And should you know the करण घुर्जे, मन आगे वञण घुर्जे, अदब करण घुर्जे. पर जॾहिं असां must use कयूं त must is more stronger than the should. माना तव्हांखे हाणे ई करणु घुर्जे ऐं ज़रूर जल्दी करणु घुर्जे. Obligation, necessity. I must memorize all of these rules about tenses. मूंखे tenses जा सॼा rule memorize करणु घुर्जनि ऐं ज़रूर करणु घुर्जनि ऐं जल्द करणु घुर्जनि. Should में इहो आहे त करणु घुर्जे पाण कॾहिं बि माण्हू करे. But must shows very it is stronger than the should. Deduction, she lied to the police. She must be the murderer. असां माना करे ना पाण result or conclusion त कुझु हूंदो त उन sense में mustn't या must not is used to express prohibition. You mustn't smoke in the restaurant. It is forbidden. तव्हां smoke तव्हांखे न करणु घुर्जे छो त इहा मना आहे. May and may जा uses. The verb may is used to express possibility. Richard may be coming to see us tomorrow. Shafiq may be coming to see us tomorrow.
पॉसिबिलिटी आहे त माना अची सघे थो या परमिशन लाइ बि यूज़ थींदो आहे. मे आई बोरो योर डिक्शनरी. Next is might. Might basically pass for my major. The verb might is used to express slight plausibility. It looks nice, but it might be very expensive. आहे तमाम सुठो पर तमाम घणो महांगो हूंदो. The past of a may in reported speech, the president said he might come. Right? Can जब use so can ability ला use थींदो ability ला. David can speak 3 languages. Permission, can I sit in that chair please? Offers, can I carry the luggage for you? ताणी different uses and जेके असां पढ़ी रहिया आहियूं ऐं हिननि जा sentence में examples बि त जंहिंसां concept वधीक clear थियनि. Could, हाणे could जे uses आहिनि request लाइ बि use थींदो आहे. Could I borrow your dictionary? Suggestion लाइ use थींदो आहे. Could you say it again more slowly? Ability लाइ use थींदो आहे. I think we could have another girl for permission line. Could I open the window? I have to, yeah, has to. The uses pranasi. External obligation. You have to take off your shoes before you get into the mosque. And don't, it doesn't have to. Doesn't you use C9? It's not, is not necessary. Kashi zaruri na hoje. You don't have to do all these exercises. Only the first one. हाँ ऐसा कंदासीं हिकिड़ी ॿ एक्सरसाइज कंदासीं मॉडल वर्ब जा. तो बी रेडी एंड राइट इन कमेंट त तव्हांखे मॉडल वर्ब सम्झ में आया. हाणे पहिरीं असां जी एक्सरसाइज कंदासीं. एक्सरसाइज नंबर 1 तव्हांखे रुॻो ॿुधाइणो आहे त इन में मॉडल वर्ब कहिड़ो आहे. जस्ट ओके. A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality. हाणे मॉडल वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब में फर्क इहो आहे त ऑक्सिलरी वर्ब जुमले में यूज़ ना मेन वर्ब जी मीनिंग या मेन वर्ब के ठाहिण लाइ कंप्लीट करण लाइ. जीअं त शी इज राइटिंग अ लेटर. राइटिंग माना लिखण. इज आहे हेल्पिंग वर्ब माना ई जुमले के कंप्लीट करण में मदद करण में कम ईंदो आहे. पर जेको मॉडल वर्ब्स ना उहे मॉडलिटी शो कंदा आहिनि. हाणे मॉडलिटी में मुराद का एबिलिटी का परमिशन या ऑब्लिगेशन. An example is some modal verbs are can, could, may, might, must, will, would, and shall, should. So, are you ready for the exercise? Now let's start with the exercise. ठीक. हाणे 10 सेंटेंस तव्हांखे ॾिना. इन 10 सेंटेंस में तव्हांखे रुॻो अंडरलाइन या सर्किल करणो आहे त कहिड़ो इन जुमले में मॉडल वर्ब आहे. Write down, but please you should mention 1, 2 नंबर जरूर लिखजो कमेंट में जी खबर पए त तव्हांजा कहिड़ा माना तव्हां आंसर्स आहिनि. नंबर जे ज़रिए सां वी कैन इजीली आइडेंटिफाई. इन्हनि सेंटेंस खे तव्हां पढ़ो ऐं जस्ट आइडेंटिफाई विच इज द मॉडल वर्ब. जेको मॉडल वर्ब आहे उनखे सिर्फ़ अंडरलाइन करणो आहे हिन फर्स्ट एक्सरसाइज में. माना एग्जांपल या आई कुड फाइंड आउट माय टेस्ट स्कोर नेक्स्ट वीक. हाणे इन में जेको कुड जेको आहे उहो तव्हांजो आहे मॉडल वर्ब. हाणे मां 10 सेंटेंस पढ़ंदुमि. सेंटेंसेस तव्हां स्लोली write down and please write answer with the number. Number जरूर लिखजो कमेंट में. Okay. He shall bring the food very soon. Number 1, I repeat. He shall bring the food very soon. Number 2, we can definitely win the championship game. Number 3, I can speak a little Spanish. Number 4, you should stop smoking because it is bad for you. Number 5, may I sit down now? माइक दबा ॿी रिपीट थो कयां. तव्हां लिखी वठो पोइ तव्हां चवंदा सर स्लाइड्स मूव ऑन करे छॾियो पर असां लिखी न सघियासीं. उन्हनि जे करे मां वरी हिकु दफ़ा रिपीट कयां थो. दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग एंड प्लीज नोट डाउन. जस्ट राइट नंबर एंड आंसर इन द कमेंट. Number 1, he shall bring the food very soon. Number 2, we can definitely win the championship game. Number 3, I can speak a little Spanish. Number 4, you should stop smoking because it is bad for you. Number 5, may I sit down? Pen paper खणो ऐं नोट डाउन कंदा वञो त हर सेंटेंस में कहिड़ो मॉडल वर्ब आहे ऐं पोइ कमेंट में सिर्फ लिखो. Now next, number 6.
I can play basketball very well. I'm number 7. I must go now. Number 8. Can you help me lift the couch? Number 9. I ought to tell the truth to the teacher. Number 10. Could you pass me the ketchup? Number 11. It must be very cold on the east coast. And total माना 11 sentences लिख रहा है जल्दी जल्दी आंसर्स लिखो कमेंट में ऐं let's see the ताना yes पहिरीं एक्सरसाइज में रुगो असां इहो आइडेंटिफाई करण सिखूं था त what are modal verbs ख़बर पए तव्हांखे इहो ख़बर आहे त जुमिले में modal verb कहिड़ो आहे. So the first exercise is just to identify modal verb. जेको modal verb आहे तव्हां डायरेक्टली कमेंट में लिखो त वन जो कैन टू जो शुड आहे the numbers. Then we will move on to the next exercise of modal verbs. Okay, so should we start now? Or have you written? Or I repeat once more. मैं कहता हूँ ये repeat तो करें. Okay, number 6. I can play basketball very well. Number 7. I must go now. Number 8. Can you help me lift the couch? Number 9. I ought to tell the truth to the teacher. Number 10. Could you pass me the ketchup? 11. It must be very cold on the east coast. ताने comments में लिखा अच्छा लिखा है. Very good. Good. Tani participation tamam sutiya. I am really happy, extremely happy that you people are participating attentively and you are taking keen interest. ताके को interest आहे तो you are learning. I ता सही भी लिखो था we don't know few answers. ता question भी पूछोगा. तानी participation it's really appreciable and I really appreciate your efforts, your dedication, your queries. ठीक है. हम ताके really salute करे सकां तो and I really appreciate you. Okay. Now let's start with the answers. Number 1, he shall bring the food very soon. Anyway, shall जेको आहे सो modal verb आहे या modal auxiliary verb आहे. Next is we can. Can is also showing here modal verb. Number 3, I can speak a little Spanish. Can is modal verb. 4th is should. 5th is may. जिन पंहिंजा आंसर चेक कयो तव्हांखे ख़बर पई त what are modal verbs. At least तव्हांखे आइडेंटिफिकेशन थी वञे लफ़्ज़नि जी. Okay, next. 6 हुयो I can play basketball very soon. ठीक है. इनमें can जेको आहे सो आहे I must go now. इनमें must आहे. 8 सतना can you help me lift the couch. इनमें can आहे. Number 9 I ought to tell the truth to the teacher. I ought to. Ought to is modal verb. 10 में तां लिखियो could you pass me the ketchup. 11 है must. So these are the modal verbs. हाँ तां के exercise 1 में तां वो identification कई त कहिड़ा modal verbs आहिनि या modal verbs कंहिंखे चइबो आहे. At least तां के know how थी वई. न असां हिकिड़ी ॿी last exercise था कयूं modal verb जी जंहिंमें तां के हाणे modal verb 5 sentence में put करणो आहे. Now let's start. Complete the sentences with the modal verb from the box below. Sometimes more than one answer is possible. ऐं हा थी सघे थो त हिकिड़े जुमिले में ॿ या ॿिनि खां मथे बि modal verb यूज़ थी सघनि था depending on the sentence meaning, structure or function. Can, cannot, cannot have, could have, don't have, had better, might, must have, mustn't, need, ought, should not. ये जेके भी वर्ब तव्हांखे मिलनि मॉडल वर्ब्स इन्हनि मां ई तव्हांखे ब्लैंक्स जा आंसर लिखणा आहिनि ब्लैंक्स में इन्हनि जे अलावा न लिखणा. आई रिपीट तव्हां रिपीट कयो त इहे वर्ड नोट डाउन करे छॾियो इन्हनि मां ई तव्हांखे आंसर्स लिखणा आहिनि. कैन, कैन नॉट हैव, could have, don't have, had better, might, must have, must not, need, ought, should not. Okay, and there are total I think 10 sentences. ठीक है. And the 10 sentences I am reading it slowly ताकि लिखी सको properly. I कोई काम को देना कहने से you देश
Be exhausted after your long trip. Come in and have a drink. इन में कहिड़ो मॉडल वर्ब लिखंदो तव्हां पाण सोचो सम्झो ऐं लिखो कमेंट में एक्सरसाइज 2 जो नंबर 1 छा थियो जॉन डेश taken your car keys he has not even left the house. Number 3, I will not go out this afternoon because the weather forecast is not very good and I dash get wet. Next is number 4, you number 4th I use you dash to apply for the job yet you can do it later this week. Fifth sentence I dash left my wallet in the car. I cannot find it anywhere. Basically ये 5 सेंटेंस हैं पर by mistake मैंने 6 कह दियो हम आखिरी दफा रिपीट करी रहे हैं sentences slowly तां ये लिखो. Number 1 is you dash be exhausted after your long trip. Come in and have a drink. Number 2, John dash taken your car keys. He has not even left the house. Number 3, I will not go out this afternoon because the weather forecast is not very good and I dash get wet. Number 4, you dash to apply for the job yet. You can do it later this week. Number 6, I dash left my wallet in the car and I cannot find it anywhere. ये 5 सेंटेंस बेसिकली नंबर 6 हाणे दो तांजो. Number 6 is that dash be Jack. Jack is a name. It is possible he said he was going to Spain. Number 7, you dash step into the headmaster's office without permission. Number 8, tell your sister she dash stay the night here if she wants to. Number 9, you have already drunken a glass of wine. You dash not drive. Let me. Number 10, you dash see the Eiffel Tower and the Louvre when you go to the Paris. ठीक है हाँ मैं वही रिपीट कर रहा हूँ ये sentences. Number 6, that dash be Jack. It is impossible that he said he was going to Spain. Number 7, you dash step into the headmaster's office without permission. Number 8, tell your sister she dash stay the night here if you want to. Number 9, you have already drunken a glass of wine. You dash not try let me. Number 10, you dash see the Eiffel Tower and the Louvre when you go to Paris. हिकु दफ़ो मां quickly ने तव्हांखे repeat कयां थो जो तव्हां ॾिसी वठो note down. These are basically 5 sentences in first slide and 6 to 10 in your next slide. Answers ॾिसूं. So write down. Okay. Key. Listen to the key में तव्हां आंसर चेक कयो. You must be exhausted after your long trip. Come in and have a drink. इन must जो का पहिरें जो आंसर आहे तव्हां पंहिंजे कमेंट्स में भी आंसर ॿुधायो तव्हां छा लिखियो. Number 2, John cannot have taken your car keys. He has not even left the house. इन जो मतलब आहे त जॉन कार जी कीज़ नथो खणी सघे छो त उन अञा घर बि कोन छॾियो आहे. He is at home. ऐं थर्ड में ईंदो could. फोर्थ में आहे don't have. ऐं फिफ्थ आहे must have. सिक्स में ईंदो cannot. 7 is must not या cannot ॿई सही थींदा. 8 is can. 9th is had better. 10th is must. So I hope it is clear and visible. ताकि समझ में अची वञो त मॉडल वर्ब छा आहिनि इन यूज़ेस ऐं एक्सरसाइज. हाणे असां स्टार्ट करायूं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज पंक्चुएशन मार्क्स. पंक्चुएशन तव्हां इहो टी खे गौर सां ॾिसो त इन में कुझु सिंबल्स आहिनि. अच्छा जंहिंखे डेफिनेशन अचे थी त व्हाट इज पंक्चुएशन मार्क, राइट डाउन इन द कमेंट में लिखो पंक्चुएशन मार्क छा खे चइबो आहे या पंक्चुएशन मार्क कहिड़ा कहिड़ा हूंदा आहिनि. जंहिंखे अचे थो त उहो लिखे कमेंट में. हाणे तव्हां टी खे गौर सां ॾिसो त इन टी में इलाही पंक्चुएशन मार्क्स आहिनि.
पंक्चुएशन ट्री आहे बेसिकली, इनमें डिफरेंट पंक्चुएशन आहिनि। अगरि ये सब पंक्चुएशन असांजी लैंग्वेज में सही थी वञनि, सही जगह ते पुट थियनि सेंटेंसेस में, त असांजी लैंग्वेज तमामु इफेक्टिव थी वेंदी। सो दीज आर, ऐं इहो ट्री आहे, इहो ट्री मुकमल आहे। अगर ट्री में रूट्स पानी सही हुजे त हिकिड़ो वण हूंदो, उहो बहितर तरीक़े सां ग्रो थींदो। इन सेम तरीक़े सां जॾहिं असांजी अगरि पंक्चुएशन सही आहे त असांजी लैंग्वेज सही रहंदी, इफेक्टिव रहंदी, ऐं असां का मिस्टेक्स कोन कंदासीं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज पंक्चुएशन। हाणे पंक्चुएशन मार्क कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? यू कैन सी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के पीरियड बि चइबो आहे। You can see at the left side with the red color one, full stop, yeah, period. Next is comma, question mark, semicolon, exclamation mark, colon, apostrophe, round brackets, square brackets, quotation mark, यानी कि जब वो inverted commas, ellipsis mark, hyphen, dash, slash, at sign, at की sign है, at the rate, brace, asterisk, ये सब तव्हांजियूं आहिनि पंक्चुएशन। असां कुझु जा स्पेशली डिस्कस कंदासीं इन शॉर्ट कि जुमले में कीअं बहितर लिखिजे। हाणे तव्हां ॾिसो ॿी स्लाइड में त कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, apostrophe, कोट्स या कोटेशन मार्क, डबल कोट्स, हाइफन, डैश, स्टॉप और स्लैश, यानी कि स्टॉप भी चइबो आहे, पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट, एलिप्सिस और एस्टेरिस्क। हाणे इहे तव्हांजा पंक्चुएशन मार्क आहिनि। If your punctuation marks are good, you punctuate your sentences properly, effectively, then your language is good. It has a good impression. You are more creative. So तव्हांजी language बिल्कुल सुठी हुजे, punctuation सही कजे। Now let's start with the punctuation without wasting much time. Here are some basic rules to keep in mind. हाणे कुछ rules हैं जेके असां discuss करे रहिया आहियूं हींअर। Every sentence must end with a full stop. असांजो जेको बि जुमिलो आहे उहो हमेशा फुल स्टॉप ते ख़त्म थींदो। अगरि उहो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आहे या इंपरेटिव सेंटेंस आहे, फुल स्टॉप या पीरियड ते ख़त्म थींदो। Proper nouns, especially names of people, places, brands, unique instances of class must always be capitalized. अगर जुमले में प्रॉपर नाउन अची वञे, के खास माण्हू जो नालो, के जगह जो नालो, के जानवर जो नालो या के भी एक्सेट्रा, त प्रॉपर नाउन हूंदो त जुमले शुरू में हुजे, मिडिल में हुजे, एंड में हुजे या किथे बि व्हाटएवर, उन जो लेटर, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल हूंदो। फॉर एग्जांपल, शफीक अहमद इज अवर इंग्लिश टीचर। शफीक जो एस, अहमद जो ए, ये ॿई कैपिटल्स हूंदा। इंग्लिश जो भी कैपिटल्स हूंदो। कायद आज़म इज the founder of Pakistan, and कायद आज़म क्यू ए कैपिटल्स ना, नालो आहे के माण्हू जो, पाकिस्तान पर्टिकुलर मुल्क जो नालो आहे, प्रॉपर नाउन आहे त पी कैपिटल्स नो। So you need to be very careful where we have to write capital letter. Third is, when you use opening quotation marks, do not forget to use closing quotation marks at the end of quoted word or phrase. असां अक्सर कोटेशन मार्क्स लिखंदा आहियूं, कंहिं माण्हू जो कोटेशन लिखंदा आहियूं त उन्हनि छा चयो, या कंहिं सहाबी वग़ैरह जो, या कंहिंजो, या हॉली प्रॉफिट जो कंहिंजो कोटेशन लिखंदा आहियूं, कंहिं राइटर जो, त असां उन एग्ज़ैक्ट वर्ड्स खे इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स में क्लोज कंदा आहियूं। कोटेशन मार्क्स आर when quoted or sometimes to convey irony, not for emphasize. Emphasize is conveyed by emboldening or utilization followed by an exclamation mark. Quotation marks कॾहिं ॾींदा जॾहिं को particular के माण्हू जी ॻाल्हि हुजे, exact words. Do not use an apostrophe when you are pluralizing a word. The plural of toy is toys. जॾहिं असांखे लफ़्ज़ प्लरल लिखना हो तो उनमें apostrophe use न कंदासीं। Toys आहे त toys रहंदो, toys कोन थींदो। Apostrophe are used. Apostrophes are used to form contraction. Her apostrophes contraction short form ठाहिण लाइ बि use थींदा आहिनि, and it shows position. जीअं मां चवां, this is Ali's pen, Ali G pen. Ali's G pen आहे त Ali खां पोइ apostrophe S ऐं पोइ pen, माना Ali G pen. Sorry. So it shows position.
ये कुछ रूल्स हुआ जेके असांखे यादि रखण घुर्जनि. सेंटेंस एंड विद द फुल स्टॉप. अगर क्वेश्चन आहे त क्वेश्चन मार्क ते, एक्सक्लेमेटरी आहे त एक्सक्लेमेशन मार्क ते, प्रॉपर नाउन्स आहिनि त कैपिटल हुजनि, and quotation marks and apostrophe. These are basic punctuation marks. असां ये डिस्कस कया basic punctuation marks जी तव्हांजे सेंटेंस में करेक्शन हुजे. ओके, सो हाणे हिकिड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज था कयूं ऐं तव्हांखे कुझु जुमला ॾिना वेंदा, ऑलमोस्ट 10 आहिनि, त इन्हनि सेंटेंस खे पंक्चुएट कयो, पंक्चुएट रीराइट कयो, माना कमेंट में लिखो. तव्हांखे ॿ एक्सरसाइज आहिनि, बट फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज. ठीकु आहे, त हाणे लिखो rewrite each sentence using the correct punctuation. हाणे punctuation आहिनि, हाणे मां जुमला पढ़ां थो. Number 1 आहे a grandparent's job is easier than a parent's. I repeat, number 1, a grandparent's job is easier than a parent's. हाणे इन में कहिड़ी punctuation mark आहे, correct कयो, rewrite कयो ऐं comment में लिखो complete sentence with the punctuation mark. Punctuate these sentences. Number 2, it looks as if the sun goes around the sun, but of course the earth really goes around the sun. ठीक है, तो इतने तमाम ये जगह सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क करने लिखो. नंबर 3, he neither smiled, spoke nor looked at me. Complicated ना, punctuation makes difference. इधर जुमले की चेंज कर दिया. Long ago in a distant country there lived a beautiful princess. અને ચાર જુમલા એને રીરાઇટ કયો, વરાય કયો, comment में complete पर correct punctuations now. Punctuate these sentences and rewrite. मैं एक दफा वही repeat कया तो. Number 1, a grandparent's job is easier than a parent's. Number 2, it looks as if the sun goes around the earth, but of course the earth really goes around the sun. Number 3, he neither smiled, spoke nor looked at me. Number 4, long ago in a distant country there lived a beautiful princess. Next, आखिरी बाकी सेंटेंस है ये, आई कमेंट में लिखो नंजा. Rewrite. Number 6. Number 5, it was my aunt who took Ali to London yesterday, not my father. Number 6, my brother is called Nisar, he was born in May. Number 7, sorry to disturb you, could I speak to you for a moment? Number 8, is it any use expecting them to be on time? Number 9, John's going to sleep during the wedding was rather embarrassing. Number 10, having lost all my money I went home. And so without punctuation, बगैर punctuation जो जुमलो लिखण कितो डिफिकल्ट है. My meaning की change थी वने, it gives another image, sense ही change थी वने. अगर तव्हां इन correct लिखियो punctuation तो जुमलो तव्हांखे sense ॾींदो. So rewrite these sentences in a comment, then I will check it. मैं एक दफा वरी repeat कयां तो ये last 5 sentences. It was my aunt who took Ali to London yesterday, not my father. My brother is called Nisar, he was born in May. Number 7, sorry to disturb you, could I speak to you for a moment? Number 8, is it any use expecting them to be on time? Number 9, John's going to sleep during the wedding was rather embarrassing. Number 10 is that having lost all my money, I went home. Let's see in the answers. Charlie can comment me. ये sentence. So let's start now. Okay, number 1, a grandparent's job is easier than a parent's. Charlie, no answer. In punctuation, a grandparent's job is. A grandparent's job is easier than a parent's. सबका पहले तो इनमें कोई full stop ही नहीं. कोई error mistake. ठीक है? So you will use full stop in the first sentence. Number 2, it looks as if the sun goes around the earth, but of course the earth really goes around the sun. इनमें भी full stop ही दो. अगर चाहो तो अर्थ का वो कॉमा ली सकता. Number 3, he neither smiled,
comma, spoke nor looked at me. Smile ka wo comma indo, I end में full stop. Long ago in a distant country, long ago का वो comma, in a distant country का वो comma, I end में full stop. Number 6, it was my aunt who took Ali to London yesterday, not my father. It was my aunt, comma, who took Ali to London yesterday, comma, not my father. My brother, the first my जो M capitals लो is called Nisar. Nisar जो N capitals लो, ये particular नाम हुआ, full stop in Nisar का पो. He जो H capitals लो, he was born in May. May is the name of month. May जो M capitals लो, I full stop. Sorry to disturb you. Full stop in the you हाँ पोए. वो could you see capitals in the could I speak to you for a moment? And a question mark in the moment हाँ पोए. 8. Is it? Question mark. Is it any use expecting them to be on time? And end में question mark in the could. Number 9. John's. John is. John का po apostrophe is. John is. John is going to sleep during the wedding. Was rather embarrassing. John is going to sleep during the wedding was rather embarrassing. Write down in comment. John is going to sleep during the wedding. Full stop. It was rather embarrassing. It लिखी embarrassing का full stop. Last is having lost all my money, comma, I went home, full stop or period. ये तांजा होया 10 sentence punctuation जा. हाने जो last exercise जिकी माना कि as a homework तो दी वना. आई ता you note down करे वठो. This is the exercise. Or we can continue by tomorrow. Okay, ये last exercise माना के ध्यान थो. ता इन्हें के note करे वठो. and punctuation ता comment में लिखो. I will check it. To punctuate paragraph using full stops, capital letter, exclamation mark, and question mark. इनमें सब लिख रहे हैं. मैं paragraph पढ़ा तो ताकि इनमें सब punctuation mark सही करे लिख रही हूँ. Yesterday was the first day of the school holidays. My family and I traveled to Portsmouth in the south of England. We went there with my aunt Samina, my uncle Ani, and my 2 cousins. We stayed in a guest house next to the sea. On most days we sailed along the coast. Although it was busy with the other boats, it was fantastic. Would you like to go? In a jumle में जेके भी punctuation mark अंदाज़ उसे ही कर लिखनी है. यो comment में लिखो पूरा paragraph है कि ना वही पढ़ना तो मैं भी ना करे जी. And I'm like mistakes. You need to punctuate it. Yesterday was the first day of the school holidays. My family and I traveled to Portsmouth in the south of England. We went there with my aunt Samina, my uncle Ani, and my 2 cousins. We stayed in a guest house next to the sea. On most days, we sailed along the coast. Although it was busy with the other boats, it was fantastic. Would you like to go? And I'm reading my the punctuation. So write down, complete paragraph, rewrite and punctuate it, and write in the comment. Comment me you likho. Je nanta ta WhatsApp group te share kare sakota. And then I will tell you, have you punctuated properly or not? I ajit sampani grammar complete kari. I subhane ka inshallah sa start kanasi. Passages reading comprehension from your textbook. I अगर कोई भी difficulty है, any question, write in comment or in WhatsApp group, तां लिखी सको था. कोई भी grammar topic रह जीवा, ताकि समझ में ना आयो जे या ताको add करना चाहिए, you can write. We appreciate your feedback, and we will keep on being in contact with you. आखिर में you be ready रहो. We are going to start very important lesson of comprehension. जेके तांजे IB जे पेपर पैटर्न हिसाब सां उहे स्टार्ट कंदासीं.
ऐं पंहिंजो ख्याल रखिजो. Till then, Allah Hafiz.